So वेलकम स्टूडेंट्स। इस क्वेश्चन में दिया है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 4 by x पावर 4 where a is greater than 0 and this limit L is a finite number। ऐसा है तो you're asked to find the values of a and L effectively। So आपको first two options deal with the value of a and the next two options deal with the value of L, this limit। ठीक है, so effectively हम इस लिमिट को एनालाइज करना पड़ेगा। ठीक है, so let us start analyzing this limit। So L is equal to, so limit x tends to 0। so आप देख सकते हैं, आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन किया तो x is equal to 0, you get a minus a 0 by 0 form। So this is an indeterminate form, so you have to apply some methods of solving limits। so मैं इस particular question में I am trying to apply the binomial expansion। so a minus, so this is nothing but a square minus x square का power half minus x square by 4 divided by x power 4। so that is equal to limit x tends to 0 a minus डायरेक्टली a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर हाफ है तो कैन नॉट सॉल्व दिस। मैं पहला क्या करता हूं, एक a को कॉमन ले लेता हूं, मतलब रूट के अंदर a स्क्वायर को कॉमन लिया तो बाहर a आएगा। सो यू गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय a स्क्वायर पावर हाफ माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 बाय x पावर, दैट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 इफ यू एक्सपैंड द बाइनोमियल एक्सपेंशन। So a minus a times, so binomial expansion for rational index। so go back to the topic and try to revise this if you don't know। so binomial expansion to the power rational index, 1 minus nx, that is 1 by 2 into x square by a square plus half into half minus 1 by 2 factorial into x square by a square का whole square and so on। इसके बाद so I don't want the terms more than x power 4, क्योंकि उसके बाद का terms जो है मुझे जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि denominator में the least power is x power 4। so I just need the least power of x power 4, उससे higher powers का जरूरत नहीं पड़ेगा मुझे। so on minus x square by 4 by x power 4। so that is equal to, the most of the question is done now। देखिए, so a and minus a cancel हो रहे, minus a into 1 is minus a minus a is getting cancelled out। इसके बाद limit x tends to 0, you have an x square term here and here। so x square के साथ आप देख सकते हैं you get a by 2a square, x square के साथ minus 1 by 4। so x स्क्वायर के साथ यह है, इसके बाद x पावर 4 के साथ what are the terms that you are getting। so केवल ये वाला टर्म है 1 by 2 into minus 1 by 2। so यहाँ बाहर एक माइनस a है, so minus a into minus 1 by 2 into 1 by 2 minus 1 by 4 by 2 minus 1 by 8 and by a power 4 by a power 4। so by a power 4 divided by x power 4। now we know that when x is tending to 0 only the least power of x matters। so denominator में least power is x power 4। अगर ये वाला जो लिमिट है वो फाइनाइटली आना है तो न्यूमरेटर का जो पावर है, न्यूमरेटर में जो x का पावर है वो भी 4 होना चाहिए। so that means the least power in the numerator should also be equal to 4। इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, सच दैट द एक्स स्क्वायर टर्म विल गेट डिसअपियर्ड। सो जनरल लॉजिक है जो हम अप्लाई करते हैं इन द लिमिट्स एक्स टेंड्स टू 0। डिनोमिनेटर में द लीस्ट पावर इज 4, न्यूमरेटर में भी आपका लीस्ट पावर जो है वो 4 ही होना चाहिए। ठीक है, सो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो कैंसिल होना चाहिए। सो कैंसिल होने के लिए द कोएफिशिएंट हैज टू बी इक्वल टू 0। सो 1 by 2a minus 1 by 4 has to be equal to 0। that means 1 by 2a is equal to 1 by 4। this implies a is equal to 2। so आपको a का वैल्यू
एग्जैक्टली 2 होना चाहिए, तभी ये लिमिट जो है दैट विल बी ए फाइनाइट नंबर. सो अगर a इज इक्वल टू है तो दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड आउट बिकॉज दिस इज इक्वल टू 0. अब x पावर 4 का जो कोएफिशिएंट्स का रेशियो जो है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ द लिमिट. सो लिमिट का वैल्यू क्या होगा? सो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ लिमिट l. सो इसके बाद वंस दिस इज गेटिंग कैंसल्ड x पावर 4 कैंसिल हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ दिस कोएफिशिएंट विल बी द वैल्यू ऑफ लिमिट. सो l विल बी इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा a and a cube. So 1 by 8a cube will be the value of l. So a अगर 2 है तो already we have found that a is equal to 2. So 1 by 8a cube क्या होगा? 1 by 64. So आपका आंसर क्या होगा? a is equal to 2 and the value of l is 1 by 64. Thank you.